सो अभी तक हमने जो है स्ट्रिंग पर काम किया है और स्ट्रिंग के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है, जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है स्ट्रिंग के बाद, विच इज immutable type. So we are going to discuss on that, and hope you have understood string completely. स्ट्रिंग्स आपको समझ में आ गई थी? कीप रिस्पॉन्डिंग प्लीज, बताते जाइए, हाँ हूँ करते जाइए, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग यहाँ प्रेजेंट हो. Yes, sir. Okay, so now we are going to start tuples, and here also you will see the difference between a string and tuples, and there is a lot of difference and many similarities between these two, string and tuples. The same slicing, same index system will be applied in tuples, and the storage system is a bit different from the string. So right now I am going to start tuples. So here this is the first slide of the tuple, in which you will see that the tuple is an immutable data type in Python, and the content of tuple is enclosed inside a pair of rounded braces और parentheses. तो ये राउंडेड ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपको ये एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि व्हेन यू डील विद द स्ट्रिंग्स, you do not use rounded brackets, rather you use quotes, single quotes, double quotes, or triple quotes. Okay, but in tuple system we will use, actually this is the identity, the rounded brackets are the identity of the tuple. So wherever tuple is created, we'll see parenthesis, right? So see in the example below, a is equal to 45, 67, 89. So see here, these three are the integers and enclosed within the rounded brackets or parentheses. Okay, so all these are integers. So concentrate on these three or four examples, then you will realize that the difference between the data items and the collection of different data items, so that you'll be able to create your own tuples of any kind. So here the first example is of uh, integers, the tuple of integers. Second example is the collection of float values, and this is again the tuple. Third one is the collection of the words or the strings. There's a red, yellow, green, all the strings are there, and they can be mixed also. Like in D option, I have included integer, included string, included float values, but one thing is common, that all the values are enclosed within the parenthesis, yani rounded brackets. Hope this is clear. This is clear Yes, so sir. far. Okay, fine. Next is, now see the example, one more example. Then you will realize that the all the values enclosed within the parenthesis are not the collection of tuple.
or cannot be treated as the tuple. Okay, so as I said that the values of the tuple are enclosed within the parenthesis. So here a is equal to 123. If I write a is equal to 123 within the parenthesis यानी ब्रैकेट, जैसा कि मैंने बोला प्रीवियस स्लाइड में, मैंने बोला कि जो टपल्स की वैल्यूज होती हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर होती हैं. तो ओवर हियर a is a variable and which whose value is 123, and 123 is enclosed in the parenthesis. But uh, in subsequent lines you'll see this is not the tuple. Okay, next example, b is equal to 3.45, which is again enclosed within the parenthesis. Amar is also enclosed within the parenthesis, and Amar is a string. True is the boolean value, bool value, and this is again enclosed within the rounded brackets. So these four examples, you must say these four examples belong to tuple, but this is not. But this is not. Remember, but this is not. But the fifth example, e is equal to empty parenthesis. Is this tuple? Since a tuple is denoted by the parenthesis, and that is why you can say E is the tuple. So to ensure whether these are tuples or not, any A, B, C, D, E are tuples, which of the examples, which is the tuple and which is not. So we have to determine this. So see here, I have used a function type which shows the data type of the type you use. So if I write print type A, means you want to find the data type of A, whether this is tuple or something else. So here when you print type A, it prints integer. See here, integer. When I say type B is 3.45, but you say this is tuple, but this is not a tuple because this is float. Print C. So this is the word. Amar. Amar is the word or is string. Type C. This gives str. Means this is again not a tuple. Print type D. D is what? D is bool. The value of is and the value of D is true, and this is the bool value. And again this is enclosed in the parenthesis. Is this tuple? No, this is not a tuple. This is bool. But when you determine the type of E as initialized with the empty parenthesis, but when you evaluate the type of E, it will give you, yes, this is the tuple. So, the single valued content, देखिए यहाँ पर, the single valued content enclosed inside the round braces does not make it a tuple, as this data type of the single valued content is going to be considered as the data type or single value of the content. यानी कोई भी सिंगल वैल्यू अगर आप किसी वेरिएबल को देते हैं, बेशक उसकी जो आइडेंटिटी है राउंडेड ब्रेसेस की है, लेकिन वो टपल नहीं होगा, सिंगल वैल्यू पर टपल नहीं हो सकता. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. सो यहां पर ए बी सी डी इन सबके अंदर सिंगल वैल्यूज हैं. 123 इंटीजर का है, 3.45 फ्लोट का है, अमर स्ट्रिंग का है, ट्रू बूल का है. तो ऑल दीज आर द सिंगल वैल्यूज, and that is why they are not treated as a tuple. Fine. But the fifth example, E is equal to empty parenthesis. Up since there is no value at all inside the parenthesis, and that is why it is treated as the initialization of the tuple. So here this is treated as the tuple, and that is why E is tuple. So the type of every identifier is given here. A is integer, B is float, C is str, D is bool, and E is the tuple.
सो होप दिस इज क्लियर कि हर वैल्यू विच इज written in the parenthesis cannot be treated that as a tuple. इस चीज का आपने ध्यान रखना. Then how is tuple? How is tuple treated? How should we identify the value which is in the bracket and it is not the tuple? मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है वो टपल नहीं है? सर वेरी सिंपल. If you see any value inside the parenthesis and somebody says that this is a tuple, so you must ensure that the value inside the parenthesis cannot be treated as a tuple until and unless it is followed by at least one comma. At least one comma. So see in on next slide here. See here, tuple containing same type of data like स्ट्रिंग्स में भी लिया था और यहाँ पर भी लेने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम सिंपल टाइप सेम टाइप लेंगे एंड डिफरेंट टाइप का भी और मिक्स टाइप का भी लेंगे. सो सी हियर a इज इक्वल टू राउंडेड ब्रेसेस 45 67 89 35 एंड 12. सो देयर आर 5 वैल्यूज बिल्कुल स्ट्रिंग की तरीके से. स्ट्रिंग में अगर अमर को आप लेते हैं तो अमर के अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं और उस पर अगर आप कोई लूप अप्लाई करते हैं उस स्ट्रिंग पर तो आप ये देखिएगा कि वो 4 टाइम्स रिपीट होता है. ओके, नाउ here we are going to manipulate tuple. So see here, this the series or the collection is written within the rounded braces. When you say print age, and one more thing, every element in tuple like string is given, is assigned an index. हर एक एलिमेंट जो कि टपल के अंदर है या स्ट्रिंग के अंदर होता है उसको एक यूनिक इंडेक्स दी जाती है और ये यूनिक इंडेक्स, दिस यूनिक इंडेक्स बिगिंस फ्रॉम 0. सो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो ये इंडेक्स जो है बढ़ेगी 0 1 2 3 4. लेकिन जैसे ही आप उल्टा चलोगे तो ये चलेगी -1 -2 -3 -4 -5 as we did in strings. Okay, but how to use the values of the tuple? We'll have to use square brackets. So see here, print a0. A0 means a is the tuple name and 0 is the index of the value. So a0 means I'm going to talk about 45. So while printing A0 means I am going to print 45, comma A3 means I am going to print or discuss A3 0, 1, 2, 3, 35. So here this is 45 and this is 35. So when you say print A0, A3, it will print 45 and 35. Similarly, see here, this is some manipulation or calculation you see. Over here, we have used a library function called len to find the length of the structure. So structure is tuple and tuple A is having 5 elements. So when you say A length of A means length of tuple A. So length of tuple A is 5. So 5 minus 1, 4. So what is A4? What is A4? What is A4? 12. 12, right? So when you say print a len of a minus 1, so it means it becomes a4 and a4 is 12. So it prints 12 here. Next, print a0 plus a1. And one more thing, this is immutable structure. Always remember, tuple is an immutable structure which in which you cannot add, cannot enhance or subtract any value or modify any value because this is immutable, unchangeable. जो एक्चुअल कंटेंट है दे कैन नॉट बी चेंज इन द टपल, वो बदले नहीं जा सकते. केवल
कॉन्केटिनेट हो सकते हैं, जो कि हम अगली स्ट्रिंग पे अगली स्लाइड पे बात करेंगे. So here A0 means 45 plus A1 means 67. So I am going to add 45 and 67. Now addition of this is 112. So here see 112 and 124, because I am going to add these two. Value of index 2. Index 2 is 89. Value of index 3 is 35. So 89 and 35, it gives 124 here. Okay. Now, if I apply or implement the loop on this structure for I in A, means A is what? A is the collection of integers which is in the form of tuple. So when say for I in A, means I want to traverse the entire tuple. I want to access each element of the tuple. So when I say for I in A, print I end with dash. So it will print 45, then dash, 67, then dash, 89, then dash, 35, then dash, 12, then dash. Okay. So here this line is printed. Okay. The same example can also be done using length function, because it will replace the tuple with the number of elements. The number kitna hai elements ka? There are 5 elements, so it will be replaced by 5. So here it means for C in range of 5, so it will start from 0 and will go up to 4. A0 followed by hashtag. So A0, any first value 45 followed by hashtag, 67 followed by hashtag, 89 followed by hashtag, 35 followed by hashtag, 12 followed by hashtag. सो यहाँ पर जैसे कि हमने स्ट्रिंग में किया था वैसे ही हमने टपल में भी किया है. सो देयर इज नो डिफरेंस. तो आप ये देखिए, जब आप इस तरह की स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो इट ट्रेवर्सेस फ्रॉम इंडेक्स, बिगिनिंग इंडेक्स टिल एंडिंग इंडेक्स -1. यानी 0 से लेकर के इसकी लेंथ क्या है, 5 है, तो 5 तक जाएगा, 5 - 1 तक जाएगा. सो 0 1 2 3 4 यानी 5 एलिमेंट्स दिस वे आर प्रिंटेड here. Then every element will be printed and will have dash in the end. After the value, a dash will be inserted. Means you are printing the value, and after printing the value, you are putting one dash. Printing the value, putting one dash. So this way, the entire tuple is printed. And if you are using index number, यानी like 0 से लेकर के 4 तक, 0 1 2 3 4, so it will print A0. So A0 is 45 followed by the hashtag, the next value A1. A1 is 67 followed by hashtag, and so on. So this way you can apply the loop. Next, this is very important, and see this statement जो call out में जो लिखा हुआ है, it should be taken care of. Plus operator can be used to concatenate the two tuples. यानी tuples की जो values हैं उनको हम ऐड नहीं कर सकते, बट टपल्स को ऐड कर सकते हैं. टपल्स की वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते, बट टपल्स को हम ऐड कर सकते हैं. ऐड करने का मतलब ज्वाइन करा सकते हैं. ओके, कॉन्केटिनेशन का मतलब है ज्वाइनिंग. ओके, टू टपल्स एंड other arithmetical operators cannot support tuples, like minus does not support tuple, into does not support tuple, decimal and sorry floor division, modulus, and exponent, they are not supported by the tuple. These operations cannot be applied for the arithmetical calculation, but on the other hand, you can apply plus and into sign
for different operations, plus for concatenation and into for repetitions. So see here, वो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं. When you say a plus b, it does not mean that 23 of tuple a will be added to 50 of tuple b. No, it means 23 is different and 50 will also be different whenever you concatenate these two tuples. So 23, 45, 50, 60 and 70, ये इसका मतलब होगा, यानी ये ज्वाइन हो जाएंगे. ज्वाइन होने के बाद क्या आपको आउटपुट देने वाले हैं? 23, 45, 50, 60 and 70. So these two tuples are joined together and print C gives this output. Now see this expression, d is equal to b plus a. So b plus a means the second tuple is taken first, and after that the first tuple is taken. So when you say b plus a, so second tuple is printed first, or first tuple is added to the second one. So when you add when you concatenate these two tuples, it will be like 50, 60, 70, 23 and 45. So the value of d will be likewise 56, 70, 23 and 45. Hope this is clear to you. यहां तक आपको क्लियर है या नहीं है? यानी प्रिंट डी तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है. अब आइए एनएमएल पर. एनएमएल इज इक्वल टू, जब आप एनएमएल की बात करेंगे तो एमएल के साथ में लिखा है पैरेंथेसिस यानी राउंडेड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर लिखा है अनु एंड जय. नाउ ऑब्जर्व 23 here and 45. In the similar manner, here Anu and Jay are written. Here also parentheses are there, and same is applied here. It means NML is a tuple of strings. Now see here, N is another tuple in which I am going to concatenate the third tuple. One is MNL, so this is previous one, and this is the new one. So NML, Anu and Jay. So when you concatenate Lee and Hope, it means N will have Anu, Jay, Lee and Hope. So when you print N will be like this: Anu, Jay, Lee and Hope. Okay, so it is printed here. Now see, Ken and Tab, this is again a tuple, and see one thing and note one thing more here. Can is in single quotes and tap is in double quotes. कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे single quotes में हो या double quotes में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता string cases में. So this is another tuple, and the previous tuple, that is N. And what was N? N was Anu, Jay, Lee and Hope. This is concatenated to this tuple, Can and Tap. So when you print am, so it will be printed like Can, Tap, then Anu, Jay, Lee and Hope. This is the output. Now in the next line, you'll face some problem. Next line means here L is equal to 10 plus NML plus Zen. Here you will face the problem. Some exception will be generated. Why? Because NML is a tuple, but 10 and Zen are not the tuples. Why? Because there is only one value within the parenthesis. 10 जो है केवल सिंगल वैल्यू है, जैन भी सिंगल वैल्यू है, तो ये टपल नहीं बनेगी. टपल एनएमएल हो सकता है बिकॉज एनएमएल के साथ में इतनी सारी वैल्यूज होंगी, एनएमएल के साथ में इतनी वैल्यूज हो सकती हैं, बट 10 कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ टपल एंड जैन कैन ऑल्सो बी cannot be treated as a tuple also. So इस चीज का आप ध्यान रखिएगा
कि अगर राउंडेड ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर आप जब तक सिंगल वैल्यू है तब तक वो टपल नहीं होगी, सिंगल वैल्यू ना हो और अगर उसमें गुंजाइश हो और वैल्यूज लेने की तो वो टपल हो सकती है। तो इन दिस केस one exception is generated. This exception will be called as type error because this is a string, this is also a string, but this is tuple, so they cannot be manipulated and that is why it shows some error. So यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 10 and zen are independently single values inside rounded basis, so will be considered as strings and not tuples. ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so we are going to next. अब यहाँ पर मैंने जैसे कहा था कि कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो सकता एक्सेप्ट रिपीटेशन एंड कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन का मतलब है यू विल हैव टू यूज प्लस साइन एंड रिपीटेशन का मतलब है यू विल हैव टू यूज multiply sign along with the tuple. So see here, there is a tuple called call and it has two values red and blue. When you say print call into 2, so this call tuple will be repeated twice. Red blue red blue red blue red blue. Second tuple is num is equal to 1 2 3. When you say print 3 into num, it means the num is repeated 3 times. And what are the values of num tuple? 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So when you say 3 into num, so num is repeated 3 times. Okay, so here इस चीज को नोट कर लीजिए, टपल इनटू इंटीजर हो सकता है और या इंटीजर इनटू टपल हो सकता है, एक ही बात। नेक्स्ट, this is very important slide. This is very important slide because here you are going to clear one doubt which was appearing on past two slides. पहले की दो स्लाइड्स पर इस टाइप की जो है सिचुएशन आ रही थी, लेकिन हम बार बार कह रहे थे कि ये टपल नहीं है, ये टपल नहीं है। लेकिन टपल नहीं है तो क्यों नहीं है और उसको हम कैसे टपल बना सकते हैं, दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस स्लाइड। व्हेन यू से L इज इक्वल टू empty parenthesis means you are initializing L as tuple, but when you are doing this for I in range 3, L is equal to L plus int input an integer, so over here it will show you some error. Why error? Because this is the L is declared as a tuple, but you are going to add the values. You are taking the values and adding the values to the previous sum. Yani you are taking L as the accumulator, but L is not the accumulator. This is the tuple variable. So tuple will have the collection of values, not this is not cannot be treated as the accumulator. So when you say L plus is equal to int input the sign, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है it is not possible to concatenate a single valued content enclosed inside rounded braces to be concatenated in tuple. तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि I am going to repeat L plus equals to int input 3 times, means every time it should take one value and add it to the previous one, but ऐसा नहीं होगा because this is tuple और tuple में concatenate होता है और concatenation ऐसे नहीं हो सकता और values के बीच में क्या आता है, कॉमा होता है। तो यहाँ कॉमा का तो कोई प्लेस ही नहीं दिखाई दे रहा, तो tuple बनेगी कैसे? So the solution of the sorry, बोलो फिर से बोलो। It is because it is integer हाँ contains only one value. हाँ जी, yes you are right, because L is a tuple and you are getting one integer at a time, and when you say L plus is equal to, इसका मतलब ये है कि you are adding upcoming integer to the previous one. adding मतलब summing up, but sum
is not possible in tuple like this. So what should we do so that this could be executed? So मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. चेंज क्या करना है? चेंज मैं यहां करके ही दिखा देता हूं. Here this is change. This is same. These two portions are exactly the same, but there's a little difference. Can you observe this difference? Yes, sir. A comma. हाँ, a comma. यानी कि अगर आपने इनपुट के बाद कॉमा लगा दिया तो क्या होगा कि जो भी वैल्यूज आती जाएंगी वो कॉन्केटिनेट होती जाएंगी, यानी जुड़ती चली जाएंगी. जुड़ने का मतलब सम नहीं, ज्वाइन होती चली जाएंगी. तो यार मैं 5 दिया था तब उसने एरर शो किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम पर जब 5 दिया तो उसने एरर नहीं दिया. फिर मैं 10 दिया तब भी एरर नहीं दिया, 15 दिया तब भी एरर नहीं दिया. व्हेन आई सेड प्रिंट एल, so it has printed 5, 10, 15 and the rounded brackets. So this way we can recognize a tuple and the single value. Hope this is clear. Yes. Yes, sir. Clear. Okay, next. See here, again we have tuples, and this loop is running 3 times, and in every attempt it is taking two values, string values, because s is equal to input first, t is equal to input second, so two strings will be taken as input, and l is initialized as a tuple. So when you say l plus equals to st, matlab whatever you give to the s and t will be concatenated. So suppose करिए कि first attempt में I gave A in, and A for first and B for second. So A B is a set. So in first attempt we have taken A B. In second attempt we have taken C and D, and in third attempt we take E and F. So when you apply this formula of concatenation, it will produce a complete tuple of 6 values. So when you say print L, it will print all the values of that tuple, A, B, C, D, E, F. Okay. Yes, sir. Now next, this is very important, and you should all should know the difference. As I told you that we cannot calculate, we cannot modify the values of the tuples. किसी भी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, एज टपल इज एन इम्यूटेबल स्ट्रक्चर जो कि चेंज नहीं होता, केवल जुड़ सकता है, रिपीट हो सकता है, यानी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको बार बार लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है. सो लेकिन आई ट्राई टू डू दैट. तो मैंने एक टपल लिया a इज इक्वल 23, 45, 67 एंड 78. I had printed it, print A. So it prints the complete tuple here, 23, 23, 45, 67 and 78. And when I try to summing up the values of each index or enhance the value of each index by 2, यानी मैंने क्या चाहा, मैंने चाहा 0 इंडेक्स की वैल्यू को 2 से बढ़ा दूं, 1 इंडेक्स की वैल्यू को 2 से बढ़ा दूं, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को 2 से बढ़ा दूं. ये पॉसिबल नहीं हो पाया. वाई? My formula is correct. AI means A0 is equal to A0 plus 2. A0 क्या है? 23 plus 2 क्या है? तो 45 हो जाना चाहिए, but it does not happen. ऐसा नहीं होगा. In this case, it shows the error, type error, because this is the tuple. The content of an individual element of the tuple cannot be changed. Type error. Tuple object does not support इस assignment. इस तरीके से हम assignment नहीं दे सकते. ये असाइनमेंट ही तो दिया है हमने. सो Yes. इट इज नॉट पॉसिबल. और जो भी स्लाइड्स है, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज आस्क. So quick review on tuple.
the supported functions and not supported functions. Any append cannot support tuple, extend cannot support tuple, insert does not support tuple, remove does not support tuple, pop, reverse, sort do not support tuple. But the right pan of the functions will support tuple. Len you can use, हमने अब करके देखा. Count we can use, हम कर लेंगे. इंडेक्स भी सपोर्ट होगा. मिनिमम वैल्यू ही अगर आप ये कहें कि टपल में से मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए, इट कैन बी डन. मैक्सिमम निकाल दीजिए, इट कैन बी डन. सम निकाल लीजिए, इट कैन बी डन. बट यहां पर आपको सम फंक्शन यूज करना पड़ेगा. आप इस तरीके से नहीं कर सकते. सम करना तो चाहते हैं लेकिन सम का पूरा लाइब्रेरी फंक्शन यूज होगा. And what is the type of the tuple? This can also be evaluated. And instead of sort, we can use sorted in tuples. So where should we use these functions? ये हम आगे बताएंगे कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं. लिस्ट में हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह में हो सकते हैं. Next is, after this slide I'll wind up. See, ये हमने string में भी किया है. This is what? Complete tuple. Now I am going to take the slices from this tuple. कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं ये कोड अप्लाई करता हूं, देखिए किसी को भी स्लाइस करने के लिए वी रिक्वायर 2 टाइम्स कोलन्स लाइक दिस. 2 बार कोलन होना चाहिए, मैक्सिमम 2 टाइम्स होना चाहिए और मिनिमम 1 टाइम. सो व्हेन यू से प्रिंट A0 to 4, 0 से 4 का मतलब ये है यू स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 and go up to final index -1, that is 0 1 2 3, 0 1 2 and 3. So 0 1 2 3. So for 0 index, 1 index, 2 index and 3 index values are printed. Now print A colon 6. अब यहां इनिशियल तो दिया ही नहीं है, केवल फाइनल दिया है. तो इनिशियल से स्टार्ट करके, इनिशियल का मतलब हो गया शुरू से. यहां पे जब इनिशियल वैल्यू नहीं दी है, इंडेक्स नहीं दी है, तो इसका मतलब शुरू से आपको चलना है. तो 0 से स्टार्ट करिए और जो फाइनल दिया है 6 दिया है, 6 -1 5, यानी 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5. So all the values are printed here, 0 1 2 3 4 and 5. Next example, starting दिया है, ending नहीं दिया है. It means start from index number 3 and go up till end. So 3 कहां पर है देखते हैं, 0 1 2 3. So we'll start from 89, 89 65 and 32, लास्ट तक जाना है. So this is this set. Okay, now concentrate on this statement where 2 times colons are there but first part is missing, yani starting index is missing, ending index is missing. But what is this? What is this index made for? किसके लिए बनी ये इंडेक्स? नो आइडिया. इसका मतलब ये है इस, यस यस, Sir, बोलो. sir, it is a gap of 2. राइट, दिस इज गैप ऑफ 2, यानी यू स्टार्ट फ्रॉम 0 and go till end and print all the values with the gap of 2. So it will print 23 56 65. Yes, sir. So this one -1 means gap of -1. ये -1 से ही पता चल जाता है कि you are going to move backwards, यानी from last to first की ओर जाना है. तो इस केस में the entire tuple is printed backward. See here, 32 65. So this is here, and the first value will be printed in the last. And here you will have to move from end towards beginning, but the gap of 2, 32 89 45, oh sorry 43, and आगे क्या है, no idea. So this is the set. Okay, Yes, sir. there is no gap at all,
there is no gap at all, so it will print all the values of the tuple. And this example shows 4 to 1 in a starting index is greater than the final index. So this is not possible. यहाँ पर ये पॉजिटिव भी है, तो आप जो है बड़ी इंडेक्स से छोटी इंडेक्स की तरफ नहीं जा सकते, या तो ये माइनस में होना चाहिए तब हम सोच सकते थे, अदरवाइज इट विल शो यू सिंपल नल, तो empty parenthesis it will show you. And here 3 colon colon का मतलब क्या है? So you will have to start from 3 and will go up to end. 3 से स्टार्ट करिए. 3 कहां पर है? A3 89 और लास्ट तक चले जाइए. 89 65 and 32. So this is the output. Okay बेटा, so that's all for the day. Yes. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और इसको आप एक बार जो है मैं आपके ग्रुप में ये वीडियो डाल दूंगा, इतना जितना हमने पढ़ा है उतना आप फिर से देख सकते हैं.